Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj. Welcome to the class. We are continuing with KVS English for PGT and we going with the last poem in our course here today in the class. As we decided after completing the prose section at first, we will go through the poetry and this is why we are here continue, and luckily the exam date is 23rd of February, so we're getting some more time, almost one more week than we expected actually, and that will help us to complete some more part from the books that we have here, and hopefully you guys are going through the other parts like the first section and also grammar, because time bound does not allow us to go with the grammar as well. So hopefully you guys are covering your vocabs in the grammar and exactly going through the proper revision. And as I told you that after this very day we will go through the test, and the test will be held on the next Sunday. This Sunday we are going to have the test on TDT, and the next Sunday will be the test of PGT. So you guys just keep going through your revision. Okay, and today we have to study a poem, and that is Aunt Jennifer's Tiger. That's a poem of Adrienne Rich. And those who know Adrienne Rich, she was a great supporter of women cause, and she had been a strong feminist, especially being related to the modern literature. So it's Adrienne Rich. Adrienne Rich. The poem Aunt Jennifer's Tigers. Okay, as usual, at first we go through the question session from the lessons you have already learnt, and then we'll move to the poem, that is Aunt Jennifer's Tiger, and other portions. Here we go with the first question of the day. What's the name of the author who wrote the story? Sorry, what's the name of the poet who wrote the poem My Mother at 66? My Mother at 66 was written by a poet. Tell the name of the poet, and we have the answer that comes here from Sarita. She is followed by Vinita, Subhash, Ganeshwar, Sachin, Kalpana, Dhanya, and Devbrat. They have all answered it correct. The right answer is Kamala Das. Going with the next question. When was the poem The Roadside Stand first published? When was the poem The Roadside Stand first published? I repeat, when was the poem The Roadside Stand by Robert Lee Frost first published? Okay, and we have the answer there on the screen coming from Vinita. She is followed by Kalpana.
Now Sachin, Devrat, Sarita, Subhash, they have all answered it correct. And the right answer is June 1936. Okay, going with the next. Whose epitaph reads, I had a lover's quarrel with the world? Whose epitaph reads, I had a lover's quarrel with the world? Whose epitaph reads, I had a lover's quarrel with the world? What's the name of the poet that has the epitaph? Okay, and we have some answer there on the screen. That starts with Kalpana. She is followed by Sachin, Ganeshwar, Sarita, Vinita. They have all answered it correct. The right answer is Robert Lee Frost. Exactly. The epitaph is from the lesson for today, a poem published in 1942 that had the line, I had a lover's quarrel with the world. That becomes the epitaph for four-time Pulitzer winner Robert Lee Frost. Okay, going with the next. Where was the poem A Thing of Beauty extracted? Where was the poem A Thing of Beauty extracted? Where was the poem A Thing of Beauty extracted? And we have the answer. The right answer is, starting here with the reply of Sarita, she is followed by Kalpana, Sachin, Vinita, Subhash. They have all answered it correct. The right answer is Endymion. Okay, that is a work of John Keats published in 1818. Okay, now I'll move. Which work has the line, beauty rests in a beautiful mountain scene? Beauty rests in a beautiful mountain scene. Which work has the line? I repeat, beauty rests in a beautiful mountain scene. Which work has this line? And we have answer from Sarita. No, Ganeshwar, not that. And she is followed by Sachin, Kalpana, Subhash. They have all answered it correct. And the right answer is a roadside stand. Exactly. It's a roadside stand that has the line, beauty rests in a beautiful mountain scene. Okay. Which collection of poems by Robert Lee Frost had the poem A Roadside Stand? Which collection of Robert Lee Frost had the poem A Roadside Stand? Okay, and we have answer. They're starting with a reply of Sachin, and is followed by somewhat Sarita, Kalpana. They have answered it correct, and it is Further Rent, the collection that was published in 1936 and later won the third Pulitzer Prize for the poet Robert Lee Frost, had the poem
in a collection, though it was individually published in Atlantic Monthly, and that was in June 1936, but yes, in a collection it was published in a further range. Okay, going with the next one. What's the name of the country which has been mentioned as the winner in the lesson, the last lesson? What's the name of the country that has been mentioned as the winner in the poem, in the lesson, the last lesson? Okay, and we go with the answer, and the right one is starting there. Well, from actually Kalpana, Germany is not a country, it's a Germany, that should be. Well, so it's a Sachin followed by Kalpana, and Prussia is exactly the part of that alliance that was led by Germany. So it is named like Franco-Prussian War, but the head was Germany, Ganeshwa. Okay, and here is Sarita, Devrat. Devrat, it's not German, it's a Germany. Okay, and Subhash, okay, Devrat, Veneta, they have all answered it correct. The right answer is Germany, that has been the winner as a country mentioned in the lesson, the last lesson. Who wants to drive a car from this story, Lost Spring? Who wants to drive a car from the story, Lost Spring? Okay, and we have the answer that starts with the reply of Sarita. She is followed by Sachin, Ganeshwar, Kalpana, Devrat, Subhash, Sarita. Thank you. Vinita, Pradeep. That's very simple. German means something that's belonging to Germany. And Germany is the name of country, dear. Like Indian and India. India is country, not Indian. The same way, Germany is a country, not German. Okay, Devrat, Mantosh, they have all answered it correct. And the right answer is Mukesh. Exactly, that's a good one. What's the name of the real name of the rat trap seller from the story? What's the real name of the rat trap seller from the story? The rat trap. And we have answer there on the screen, starting with the reply of Kalpana, followed by Subhash, Sarita, Vinita. They have all answered it correct, and it is Captain von Stell, not Samantosh. They have all answered it correct. Captain von Stell had been the real name of the rat trap seller. Going with the next question of the day, and that is, who wrote Beauty is Truth, Truth, Beauty? Who wrote
Beauty is truth, truth, beauty. Okay, and we go with the answers. They're on the screen, starting with the reply of Sarita, followed by Kalpana, Vinita, Ganeshwar, Sachin. Okay, Mantosh. Well, it's Manindra, Sarita. Okay, that's great. And here is Sachin and Subhash. They have all answered it correct. And the right answer is, it's Ode on a Grecian Urn by John Keats that had this very, very essential and important line. Going with the next one. Who wrote the story Silk Road? Who wrote the story Silk Road? Kalpana, be careful. And we have the answer there on the screen, coming from the reply of Sarita. She is followed by Subhash, Ganeshwar, Sachin, Vinita, Kalpana, and it is Mantosh. They have all answered it correct. And it's Nick Middleton that wrote the story, The Silk Road. Okay, going with the next one. What were the names of the children of the narrator? We are not afraid to die. What were the names of the children of the narrator from the story, We Are Not Afraid to Die? Okay, and we go with the answers, starting with Kalpana. She is followed by Sachin, Vinita, and wow, Mantosh, quite shortcut you have. And here is Subhash, Deven, Ganeshwar, and Sarita. They have answered it correct to be Jonathan and Suzanne, the name of the children of the narrator from the story, We Are Not Afraid to Die. Going with the next one. What's the name of the poet whose nickname or pen name was Madhvi Kutti? What was the name of the poet whose nickname or pen name was Madhvi Kutti? And we go in just keep trying, Kalpana. I know you are a good learner. Okay, and we have the answer here, starting with Sarita, followed by Devin, Sachin, Subhash, Ganeshwar, Mantosh, Kalpana, Vinita. They have all answered it correct, and the right answer is Kamla Das. Which work has the character Stanistrom? Which work has the character Stanistrom? Which work has the character Stanistrom? And we go with the answer, starting with the reply of Devin, followed by Sarita, Subhash, Kalpana, Sachin, Vinita, Ganeshwar. They have all answered it correct, and the right answer is The Rat Trap.
Now, the last question of the day. Who introduced the term confessional poetry? Who introduced the term confessional poetry? This is the last question of the day. Who introduced the term confessional poetry? And we have the answers there on the screen. That starts with the reply of Sarita, followed by Kalpana, Sachin, Gyaneshwar, Subhash, Deven, Vinita. They have all answered it correct. And the right answer is M.L. Rosenthal. Exactly. M.L. Rosenthal was the man who started. Well, Devan, we cannot be very sure which topic should be studied actually. Instead, I would like to say that descriptive portions like narration, like transformation, and especially the writing skill is there that we should try to cover. And everything from the grammar is common to us because wherever we are preparing, we are going through this grammar lesson and expecting that these lessons are very clear in our mind. So this is how very simply we find that all parts of grammar are essential for us because that is the only section where we cannot be there to learn them by heart. It's just a part where we have to go through the exercises, read them, understand them, and especially from the KVS point of view, if I'm not wrong, they put the question comprehensively. So you should have more emphasis on comprehensive type of question. You can say concept-based questions that they generally ask. Okay, right, it's time for us to move to the biographical record of Adrienne Rich, and she is an American poet, essayist, and feminist. The one point that we discuss is feminist. Well, feminism and feminist is a modern voice speaking for women, not by just women, but by men as well. Because if we try to see the root of this feminism, appealing the brain of a woman, capacity of a women, leading quality of a women, so we can go back to Shakespeare, where we find that his heroines are sometimes even more powerful than the heroes, especially in comedy you see that the heroines are dominating. Even in tragedies you'll find that the heroines are very, very influential. And later on, by the end of the 18th century, we find Mary Wollstonecraft, and Mary had written the work in the vindication of women's right, and we see that technically for women appeal, she is the one that can be considered as a forerunner. But after the World War II, I mean in modern literature you can go with Virginia Woolf and many more, they start talking about women welfare. Even before you can go to G.B. Shah, he was great supporter of women cause. And this is how feminism comes to the main trend in our literature. And in modernity, this had been a special kind of recognition. When it comes to Adrienne Rich, she can be recognized as a feminist or nothing,
means she always speaks for the cause of women very strongly, and she had been considered as the most read and influential poet of the half of the 20th century. Well, she was born on 16th May 1929. She was born on 16th May 1929, and she had a very she had a very long and influential life, as I told you earlier. So she breathed her last in March on 27th and 2012. So it's the 27th March 2012 that she breathed her last. In fact, she is such a lady. When I read her, I'm especially shocked with the kind of achievement she had as a poetess, as a speaker for women cause, with her going to be advocate of the women cause. She coined actually a term, that is Lesbian Continuum. This term was coined by her, coined by Adrienne Rich, the term Lesbian Continuum, that especially speaks for the solidarity and creativity of the female world. In her life, we had the elder sisters, and her father was pathologist Arnold Rice Rich. Arnold Rice Rich was a pathologist and was actually chairman of pathology at the Johns Hopkins Medical School. The mother was Helen Elizabeth Jones Rich. Helen Elizabeth, at first she was Jones, after marriage she becomes Rich. So they were the parents of Adrienne Rich, very affluential, as you can see. The father was a Jew, and she had her own way of living, and she got married to Alfred Haskell Conrad. Alfred Haskell Conrad was her husband. She got married to Alfred Haskell Conrad in 1953, who was actually professor of economics at Harvard University. A very famous statement from her over marriage is there, please write down. This is a famous one representing her views. Please write down. I married in part because I knew no better way,
to disconnect from my first family, to disconnect from my first family, full stop. I wanted what I saw as a full women's life, the full women's life, comma, whatever was possible, whatever was possible. Okay, so simply you see that the poetess Adrienne Cecil Rich, why did she get married? She had a very clear view. She wanted to escape from her earlier life. Means you can say the life she was living with parents was not the type of life she was expecting. And the last one is that women's life she wanted to live. Means sometimes being feminist means opposing marriage and opposing male. People used to think, sometimes they misinterpret the thought, I must say. But what she thinks, feminism does not mean to hate or keep oneself away from the world of male. Instead, feminism is to make a space in the life of male equally, and this equality should be not only just in a closed room, instead in society and everywhere possible. She was women who could stand for the cause of women, but not without feeling herself to be complete. This is why she got married in 1953, before the publication of the second volume of her poems. She had a number of actually awards under her name she could win, and one award is especially noteworthy here, and that is she declined the National Medal of Arts Award. National Medal of Arts Award was declined by her. That's a special thing that we need to know. And she was fearless in all possible ways. She was fearless. She declined it, and that had been actually for protesting the vote by House Speaker Newt Gingrich to end funding for the National Endowment for the Arts. That happened. She could win number of awards. We cannot go with all those, but yes, the first one comes for the first collection of her poetry, A Change of World. A Change of World. In 1950, she receives for this A Change of World Yale Younger Poet Award. Yale Younger Poet Award. That is a first award for her in her literary career, and then continues with a number of awards. She won National Poetry Association Award in 1989, National Poetry Association Award. National Poetry Association Award. She won in 1989. This had been a meaningful milestone in her life.
She received Frost Medal in 1992. Robert Lee Frost, that's a Frost Medal. As a poet, she received in 1992 for her special achievement as a poetess. She had Lifetime Achievement Award in 1999. Lifetime Achievement Award. Award in 1999. Well, as I told you, we cannot go with all awards there. She had a number of awards under her belt. She could win National Book Award for Poetry in 1974. National Book Award in 1974 for the poem collection Driving into the Wreck. Driving into the Wreck. This collection won her in 1974 National Book Award for Poetry. She had Commonwealth Award in 1991. Well, so many more are there. As I told you, we cannot go with all these awards, and the main thing you will have to keep in your mind is especially the National Medal of Arts Award that she refused, and that had been a special mark in 1997. She refused this National Medal of Arts Awards in 1997. Well, the first collection of the poem was actually given a special place by W.H. Auden. A Change of the World was appreciated by the poet W.H. Auden. Had a special praise for A Change of World, the poem coming in 1950. At first receiving the Yale Younger Poets Award, and the poem that we're going to study actually, Aunt Jennifer's Tigers, was written in 1951 and later on included in A Change in the World collection. This was written in 1951. Later it was included in the collection. This was A Change of the World. That becomes the first collection of her poetry. So at first this was individual written, as we see that Change of the World comes in 1950. But yes, later on this was expanded, and in expanded this had this poem Aunt Jennifer in its collection. The poem seems to be feminist view appealing, as we always see with Adrienne Rich, and there are actually 3 quatrains used in rhyming like couplet A, B, B.
3 quatrains are used, rhyming like AA, BB. That's the way. Most you see, according to the rhyme, you can guess that it is like a couplet. But yes, it's not a couplet. It's a quatrain that has been the stanza form employed there in the poem. The poet seems to be using the metric and syllabic patterns like iambic, sometimes iambic pentameter, and sometimes it's a trochaic that she has used with rich uses of alliteration, anaphora, and repetition there. Anaphora, repetition, and alliteration are the figure of speeches that we find in the poem. Now we'll go with the text. I told you that most of the time she has used iambic pentameter, that is a syllabic pattern and a metric pattern most of the time. But sometimes it is changed very well and becomes like trochaic. Okay, now we'll go with the text here on the screen. Well, so as I told you, the poem has the reflection of her views on feminist thought. समय चाहे पुराना रहा हो या समय चाहे नया रहा हो, जो वीमेन रही हैं, जो औरतें रही हैं, उनके अपने थॉट, अपने ख्यालात होते थे, अभी भी हैं, नो डाउट। मैं होते थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले के टाइम में बहुत कम पॉसिबल हो पाता था लेडीज़ के लिए कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि उसके लिए तुमको एक तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी और उनकी अपनी फ्रीडम टू एक्सप्रेशन के लिए। और आज वो चीज़ें उनको हासिल हैं तो शायद उनके लिए ड्रीम थी, कभी सपना था। आंट जेनिफर कौन हैं? वी हैव नो क्लियर इंफॉर्मेशन, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट शी इज वीमेन। अब आप कहेंगे आंट अंकल को तो बोलेंगे नहीं सर ना, एक्चुअली इन द सेंस ऑफ अ सफरिंग वीमेन शी इज, जिसके ड्रीम में, जिसके सपने में तो उसका एक फियरलेस रूप है। और जिसे हम लोग कहते हैं कि किसी को समझना हो कि वो किस सोच वाला व्यक्ति है, तो उसकी ना क्रिएटिविटी को देखना चाहिए, उसकी पसंद नापसंद को देखना चाहिए, उसके पहनावों को देखना चाहिए, क्या पढ़ता है, क्या लिखती है, क्या खेलती है, क्या देखती है, कौन सा कलर पसंद है, एक्सेट्रा मेनी मोर थिंग्स आर देयर जो हमारी साइकोलॉजी को रिवील करती हैं। ये जो आंट जेनिफर टाइगर है ना, ये आंट जेनिफर के कोई टाइगर नहीं है। एक्चुअली पहले की जो लेडीज होती थी वो हैंडक्राफ्ट वर्क में बड़ी एक्सपर्ट होती थी, मतलब कभी वुलन सॉक्स बनाना, कभी वुलन टेपेस्ट्री बनाना, कुछ भी मतलब बना लिया करती थी अपने हाथों से, बड़ी कुशल हुआ करती थी, उनके हाथों में कारीगरी होती थी। और आप तो जानते हो ना, पुराने ज़माने में अगर कोई शादी देखने जाता था तो ये नहीं पूछता था कि इस क्लास तक पढ़ी हो, बट ये ज़रूर पूछता था कि स्वेटर बनाना आता है, खाना बना लेती हो। मीन्स उस समय की पढ़ाई उनकी वो थी। आज जैसे हम लोग कह देते नहीं हम ग्रेजुएट हैं, भले ग्रेजुएट की स्पेलिंग नहीं आती हो, है ना, क्योंकि ऐसे भी महारथी हैं, आप लोग शॉक्ड मत होइएगा। ग्रेजुएट की स्पेलिंग नहीं है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की स्पेलिंग नहीं है ना, एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, एंट्रेंस की स्पेलिंग नहीं याद होती। ऐसे महान महारथी हैं हमारे बीच में।
लेकिन उस जमाने में जो होता था प्रैक्टिकल चीजें होती थी, वो कागज पे लिखी हुई चीजें नहीं होती थी, उनको प्रैक्टिकली देखा जाता था। और जैसे मैंने कहा कि वो आर्ट से रिफ्लेक्शन करती थी। आज के समय में हमारे पास बहुत सी चीजें रेडीमेड है। कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो एक चीज को छोड़ देंगे तो पुराने की सोसाइटी जो है वो हमसे बेटर थी, अच्छी थी, जिस सोसाइटी को हम लोग जी रहे हैं। एक पक्ष को छोड़कर, जिस पक्ष पर हम लोग भी बात करने वाले हैं, वो पक्ष यह था कि लेडीज को अपनी बातें रखने की इजाजत बहुत कम लोग दे पाते थे। दैट इज द पॉइंट। जब उनकी बातें इजाजत के रूप में, इजाजत के बगैर बाहर आ नहीं सकती थी, तो वो आर्ट्स में उसको एक्सप्रेस करते थे। तो जेनिफर ने एक टेपेस्ट्री बनाया है, उस टेपेस्ट्री में उन्होंने टाइगर्स बनाए। बिल्कुल उस तरह का रिफ्लेक्शन है जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया था ओड ऑन ग्रेसियन अर्न की। और वहां पर मैंने बताया कि आप लोग जानते ही हैं कि ग्रेसियन अर्न है जिस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। उन तस्वीरों को देखकर पोएट कुछ सोचता है कि ये कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसी बात हो। ये उसका अपना ख्याल होता है, उसका अपना थॉट होता है। इसी तरह का ख्याल, इसी तरह का थॉट हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आंट जेनिफर ने आर्ट्स बनाया, वो आर्ट्स में उन्होंने टाइगर्स बनाए, एक ट्री साइड में दिया, साथ में उन्होंने कुछ लोगों को ट्री के नीचे बैठा हुआ दिखाया। आंट जो टाइगर्स लेकर आ रही ना, ये टाइगर नहीं है, ये आंट खुद टाइगर है। जो उनके अंदर का जो टाइगर है वो बाहर निकलकर चित्रकारी में आया हुआ है। आमतौर पर ये जो मैन है इनको देखकर टाइगर डर जाता है क्योंकि ये हंटर होते हैं, लेकिन ये फियरलेसली मूव करते हुए टाइगर्स ये बताते हैं कि वीमेन जो कभी मैन से डरती थीं वो उस दौर से बाहर आ चुकी हैं, उस ख्यालात से बाहर आ चुके हैं। तो खूबसूरत आइडिया है एड्रियन रिच की। चलिए देखते हैं फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। Aunt Jennifer's tigers prance across screen. स्क्रीन आप समझते हैं पर्दा होता है जिसमें प्रेंस करते हुए बेफिक्र फियरलेसली वॉक करते हुए, उछलते हुए टाइगर्स को दिखाया है जेनिफर ने। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, आप कह सकते हैं चमकता हुआ, ग्रीन बैकग्राउंड में लिया हुआ, मतलब आपको कलर भी मिल जा रहा है कि जो ये स्क्रीन बना हुआ है उसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या है, वो कलर ग्रीन है और उस पर टोपाज चमकता हुआ एक वर्ल्ड उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है जिसमें ये उछलते हुए टाइगर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। टोपाज डेनिजन्स, डेनिजन्स जो यूज किया हुआ है एक्चुअली वो टाइगर्स के सेंस में यूज किया गया है। तो चमकते हुए ये टाइगर्स नजर आ रहे हैं ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरियाली भरे हुए दुनिया से। नेचुरल है। अब इस हरियाली को दो तरह से आप देख सकते हैं। एक जो स्क्रीन उन्होंने बनाया हुआ है वो स्क्रीन हरा है उसका रंग। दूसरा, क्योंकि बात टाइगर्स की हो रही है तो टाइगर्स का प्रेजेंटेशन कहां पर होगा, ग्रीन में ही होगा, फॉरेस्ट में होगा। तो दूसरे साइड से अगर देखें तो फॉरेस्ट की भी बात वो करती हैं जहां पर उछलते कूदते खेलते फियरलेस टाइगर्स को रिप्रेजेंट किया गया। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। आमतौर पर क्या होता है, अगर टाइगर्स देख लेते हैं कि ट्री के नीचे बैठे हुए कुछ मेन है, नेचुरल है, वो शिकारी है ना। एक लड़की बगल से निकलती है, समझने की कोशिश करिए आप फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 10 शिकारी बैठे हुए कई चाय की चुस्की लेते हुए कुछ फब्बियां कस देते हैं, ईव टीजिंग करने से बाज नहीं आते हैं, गलत तरीके से नजर डालते हैं। मेनी मोर थिंग आर देयर। और कई बार तो हमारा जो फीमेल वर्ल्ड होता था वो डर जाया करता था, उसको खौफ का अंदाजा हो जाता था और इसी का फायदा उठाते थे जो फब्बीबाज होते थे, जो ईव्स टीजर हुआ करते थे।
धीरे धीरे लड़कियों ने इस बात को महसूस करना शुरू किया कि उनकी डर जो है ना, वही ये जो परेशान करने वाले लोग हैं उनकी ताकत है। मतलब सारा खेल डर का है। उन्होंने हमें कुछ ऐसी नजर से देखा कि हम डर गए, ये उनकी ताकत हो गई। उन्होंने जिस नजर से देखा उससे ज्यादा तीखी नजर मिलाकर हमने उनको दिखाया तो वो डर गए, ये हमारी ताकत है। ये टाइगर्स आज उन मेन से डर नहीं रहे हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए शिकार करने के लिए आए हुए हैं। इन शिकारियों से ये टाइगर्स डर नहीं रहे हैं। दुनिया भर के वो सारे पुरुष जो महिलाओं को ये सोचते थे कि महिलाएं उनसे कमतर होती हैं, उनसे इंफीरियर होती हैं, सोशली वो बाउंड होती हैं सिर्फ घर के लिए, या दूसरे ढंग से समझा जाए तो वो सिर्फ घर में बाल बच्चों को पालने पोषने के लिए तैयार की जाती हैं। दैट इज द फैक्ट चैलेंज्ड हियर। वो पुराना जो दकियानूसी ख्यालात था, जो लोग बैठ करके डराया करते थे, उनके लिए यह विचार है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। पेड़ के नीचे बैठे हुए इन शिकारियों से ये उछलते कूदते मूव करते हुए स्वतंत्र विचार के साथ चलते हुए टाइगर रूपी हमारी महिलाएं किसी से डरती नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलिक सर्टेनिटी। वो उस तरह से पेस कर रहे हैं, वो उस तरह से चल रहे हैं जैसे शिवलिक रोमांस आप जानते हैं ना। मिडिल पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको शिवलिक रोमांस मिलता था, जहां पर हम लोग देखते थे कि एक योद्धा होता था, वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बड़ी आसानी से पार कर लेता था और उसको डर नहीं लगता था। कोर्टली रोमांस, शिवलिक रोमांस सब मिडिल पीरियड में हम लोगों को देखने को मिलते थे, जहां एक वॉरियर को, एक नाइट को बड़े चैलेंजेस को फेस करना होता था, बड़ी डिफिकल्टीज को फेस करना होता था, और वो फेस करते थे, उसको डिफिकल्टीज को फेस किया करते थे बिना डरे, है ना। आपने ढेर सारे पढ़े होंगे, किंग आर्थर के रोमांस को आपने पढ़ा होगा, किंग हॉर्न के रोमांस को आपने पढ़ा होगा, ट्रॉय के रोमांस को कौन नहीं जानता है ना। तो ये सारे रोमांसेस फियरलेस, तो इसीलिए इन्होंने शिवलिक सर्टेनिटी। जिस तरह से हमारे शिवलिक रोमांस वाले महान नाइट्स, महान योद्धा हुआ करते थे, फियरलेसली किसी भी प्रॉब्लम से भिड़ जाया करते थे, उनको डर नहीं लगता था, उसी तरह से आज ये टाइगर्स अपने हंटर से डर नहीं रहे हैं, बल्कि बड़े स्मूथली, बड़े स्लीक तरीके से, बड़े आसान तरीके से अपने पांव को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आराम से निकल रहे हैं। मतलब कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है किसी का। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग में आप एलिट्रेशन का यूज देख सकते हैं। थ्रू हर वूल फाइंड इवन द एवरी निडल हार्ड टू पुल, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। चलिए, ये शादी का एक पड़ाव जो लगभग सबको मालूम होता है, सबने देखा होता है, सबको महसूस भी होता है। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool। Aunt Jennifer के सफोकेशन को यहां पर दिखाया गया है। ये जो अभी तक आंट जेनिफर ने बनाया है, सामने रखा है, वो एक्चुअली उनका ख्यालात है। उन्होंने सोचा कि वो किस तरह से फियरलेस हैं, दुनिया की वीमेन किस तरह की फियरलेस हैं। वो फियरलेस हैं जंगल में घूमने वाले फियरलेस टाइगर्स की तरह, जिनको शिकारियों का कोई खौफ नहीं होता। लेकिन रियल में क्या है, ये तो तस्वीर उन्होंने बना रखी थी, टेपेस्ट्री जैसे हमने कहा कि आपको बना रखी है, एक स्क्रीन बना रखी है, इमेज बना रखी है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि हरा भरा मैदान है, एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे कुछ लोग बैठे हुए, कुछ टाइगर्स हैं जो अपने झुंड में बिना किसी डर के खूबसूरती के साथ आगे निकल रहे हैं, जैसे कि वो तैयार हैं हर तरह की समस्या का सामना करने के लिए, बिल्कुल जैसे मिडिल पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमें रोमांसेस देखने को मिलते थे, जहां पर बड़े बड़े योद्धा बड़ी बड़ी मुसीबतों को बड़े आसानी से फेस किया करते थे।
अब यहां सेकेंड स्टेंजा में, सेकेंड क्वार्टर में आप देखेंगे आंट जेनिफर की जो वेडिंग के बाद लाइफ है वो कितनी सफर करती हुई लाइफ है। इसका मतलब है कि आंट को अंकल ने काफी परेशान किया है। चलिए देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो उनके वूल से ही तो बुन रही होंगी ना, उसको बुनने का काम कर रही, उसमें उनकी उंगलियां फड़फड़ा रही हैं, मतलब इतनी कमजोर हैं कि उनकी उंगलियां ठीक से वूल पे काम नहीं कर पा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। सफेद जो निडल होता था पुराने जमाने में, जो स्वेटर बुनती थी महिलाएं, उनके पास एक आइवरी कलर का, सफेद कलर का निडल हुआ करता था। इतना मुश्किल हो गया है उनको उठाना कि वूल में फंसे हुए जो निडल होता है उस निडल को भी पुल करना, खींच पाना उनके लिए मुश्किल लग रहा है। इतनी सताई गई है। एक्चुअल में हम लोगों ने वीमेन सुप्रेशन देखा ही नहीं। हमें लगता है ना कि आजकल जैसे हम लोग सोचते क्या है कि वीमेन सुप्रेशन क्या रहा होगा, जैसे हस्बैंड ने या किसी पुरुष ने किसी महिला को एक चाटा मार दिया, ये वीमेन सुप्रेशन है। भाई साहब, ये कुछ नहीं है। इसको वीमेन सुप्रेशन नहीं कहते। सुप्रेशन का जो दौर रहा था वो महिलाओं को इस तरह से सताया जाता था, मानसिक, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, कि महिलाएं ना होती ना तो जिंदा न रह पाती, खुद सुसाइड कर लेती। ये तो महिलाएं थी जो इस अत्याचार को जी गई। मैं हमेशा कहता हूं, मैं तो कायल हूं इनकी बर्दाश्त करने की क्षमता, इनकी क्षमा करने की क्षमता, इनकी समझ। दुनिया में किसी के अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं महिलाओं के अलावा। यहां पर उसी बात का जिक्र हो रहा है कि इतनी सताई गई हैं जेनिफर कि आज उनके लिए मुश्किल हो पा रहा है कि वूल में फंसी हुई अपने नीडल को भी बाहर निकाल सकें। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्यों? क्योंकि ये अंकल का मैसिव वेडिंग बैंड है, एक विशाल शादी का बोझ है जो उनके ऊपर पड़ा हुआ है। शादी का बोझ सिर्फ आंट के लिए है, अंकल के लिए नहीं है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी सिर्फ आंट के लिए है। ये शादी का बड़ा सा बोझ जिसको वो हटा नहीं पा रही, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और इतना बड़ा बोझ है कि आज भी आंट जेनिफर के हैंड पर वो बोझ बड़े आराम से बैठा पड़ा हुआ है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Okay, अगर आप देखिए तो यहां पर जो सेंस इन्होंने यूज किया है, ख्यालात, विचार कभी खत्म नहीं होते। व्यक्ति खत्म हो सकता है क्योंकि व्यक्ति को खत्म होना ही है, ये बॉडी है, शरीर है, एक दिन इसको नष्ट तो होना ही है। लेकिन इस दिमाग की निकली हुई जो ख्यालात होते हैं, जो सोच होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। वो विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। लास्ट स्टेंजा में दोनों पॉइंट सामने रखे गए हैं, जीवन और मृत्यु दोनों दिखाया गया। आमतौर पर मृत्यु को हम लोग ये मानते हैं कि जब हमारी डेथ होती शारीरिक रूप से तो वो हमारी मृत्यु है। मैं थोड़ा सा अलग मानता हूं। मेरा मानना है मृत्यु वो है कि हमारे मरने के बाद अगर कोई हमारी चर्चा ना करे या मरने के बाद हम किसी के लिए कुछ थोड़ा सा भी काम करके ना गए हों तो निश्चित तौर से वो हमारी मृत्यु है। और अगर हमने कुछ भी थोड़ा सा भी काम लोगों के लिए, समाज के लिए किया हुआ है तो हम कभी मर ही नहीं सकते। यू सी, एड्रियन रिच अभी भी हमारे बीच में है और 200 वर्ष के बाद भी हमारे बीच में रहेंगे। विलियम शेक्सपियर 500 वर्ष पहले भी थे, आज भी हैं। इनके लिए मौत हार चुकी है, इनको मौत कभी हरा ही नहीं सकती है।
तो मृत्यु को किस तरफ से देखना है वो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से देखना है। ख्याल देखिए आंट जेनिफर का, आंट जेनिफर इज डेड बॉडी के रूप में, लेकिन उनका ख्याल जिंदा है, उसी का सेंस यहां पर है। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट इस दुनिया को अलविदा कह गई, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, टेरिफाइड हैंड्स, डरे सहमे हुए उनके जो हाथ हैं, क्योंकि जब तक जिंदा थी इतना डरा सहमा हुआ उनका हाथ था कि वो हाथ इतना कमजोर हो गया था कि वो निडल को नहीं उठा पा रहा था, निडल को नहीं निकाल पा रहा था बोल से, इतना डरा हुआ। और अंकल के वो वेडिंग का वेट था, बोझ, जिसकी वजह से वो डरी सहमी सी थी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय। भाई मरने के बाद भी वो सारे ऑर्डियल, वो सारे संस्कार, सारे क्रियाकर्म, सारे रीति रिवाज अभी भी उनके साथ रिंग्ड हैं, घेरे के रूप में लगे, मतलब अभी भी उनकी उंगलियों में वो पहचान बरकरार है। अभी भी मरने के बाद भी उनकी शरीर उन ऑर्डियल से, उन विचारों से, उन परंपराओं से आजाद नहीं हो पाई थी शरीर, लेकिन ख्यालात तो कभी कैद ही नहीं हुए थे। ख्यालात तो कभी कैद ही नहीं हुए थे, विचार तो कभी कैद हो ही नहीं पाए थे, शरीर कैद हुआ था। शरीर के खत्म होने के बाद भी शरीर के साथ वो ऑर्डियल्स लगे रहे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन वो टाइगर्स जिसको उन्होंने पैनल में बनाया था, उस स्क्रीन में बनाया था, उस पर्दे में बनाया हुआ था, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो उछलते कूदते हुए चले जाएंगे। किस तरह से? प्राउड रूप में और अनअफ्रेड, बिना डरे हुए। कहने का सेंस, वो ख्याल जिसको उन्होंने शब्दों में पिरो करके, चित्रकारी में पिरो कर, शब्दों में तो नहीं था, चित्रकारी में पिरो करके उन्होंने जो तस्वीर बनाई थी, उस तस्वीर में वो उछलते कूदते हुए टाइगर उनके अंदर के ख्यालात को दिखाते हैं। दैट शोज द फेल्योर ऑफ मैन, पुरुषों की असफलता को दिखाते हैं कि आप केवल शरीर को गुलाम बना सकते थे, ख्यालात तो तब भी आजाद था। आप सिर्फ शरीर को मरा हुआ देख सकते हैं, ख्यालात तब भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। और वो उछलता कूदता हुआ टाइगर्स का झुंड अब तो सारे तरफ दिख सकता है, चारों तरफ दिख सकता है। दैट्स ऑल फॉर मी, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।